सक्कर मेन बाज़ार घंटाघर से मैं वॉक पे रेलवे स्टेशन आया। रेलवे स्टेशन पर मैं इस रक्शे में सवार हुआ रूहड़ी पुल के लिए, जो कि 150 साल पुराना पुल है और दरियाई सिंध पर ये बना है रूहड़ी पुल। तो ये मैं आपको मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप देखिए, बहुत लोहे का पुल है और ये इस दरिया पर बना है सक्कर में। ये है बड़ा दरिया, वो भी एक पुल है और ये इसमें एक ये है ट्रैफिक के लिए और वो है ट्रेन के लिए। ये आम रोड है ट्रैफिक के लिए और रोड ट्रेन के लिए, और ये दरिया है सक्कर। 150 साल पुराना पुल है, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ। इस तरफ से मैं रक्शे में आया और एक दफ़ा मैंने इस पुल को देखा। आगे मैं रूहड़ी की तरफ चला गया, फिर रूहड़ी से वापसी पर आया और फिर आगे मैं इस पुल पर उतर कर इसकी मुकम्मल वीडियो और मालूमात मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। आप इसको देखिए और एंजॉय करें। मेरे साथ एक वाक़या भी पेश आया था, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सका क्योंकि इसमें बहुत शोर है। तो वाक़या तो बहुत ख़तरनाक था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। वो जगह भी बहुत ख़तरनाक थी। तो आप इसको मुकम्मल देखिए और ऐसी जगहों पे जो कि ख़तरनाक हो अकेले मत जाइए। ये मेरा जो है ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जान की हिफाजत करें, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए ये ज़रूरी बात है कि अगर आप अपनी हिफाजत नहीं करते तो आपको हज़ारों मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोबारा ये शुरू अब सक्कर में मैं आपको एक 150 साल पुराना पुल दिखाता हूँ। तो ये है पुल और ये है दरिया जिस पर ये बना है और ये बहन से। अब आगे जाके मैं इसका फुल व्यू आपको दिखाता हूँ।
I don't know that why this tall structure has been made. Maybe for the strength of this bridge. इस जगह को अकेले उतरना और यहाँ अकेले आना मेरी सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इधर मेरे साथ एक ऐसा वाक़या भी आ सकता था कि मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। ये देखिए, इस जगह को देखे ना, ये कितना ख़तरनाक है, दो पुलों के दरमियान है और बहुत बड़ा दरिया बहता है और ये जगह मतलब है कि कोई भी नहीं है, मैं किसी को भी यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ चला गया और मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और ये मेरी नसीहत है, जब तक कि मैं हूँ, तो ये मेरी नसीहत है कि जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप अकेले बिल्कुल मत जाइए। इस जगह पे मैं आया था और इस जगह पे मेरे साथ ख़तरनाक वाक़या पेश आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। इस जगह को देखे सामने दरिया सिंध बहता है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अब दाएं बाएं कोई भी रास्ता नहीं जाता, बस ये जगह है। फिर आपने इस पे ऊपर चढ़ना है, लेकिन फिर दो आदमी को मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुझे खौफ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। वो ख़तरनाक लोग नहीं थे, लेकिन अगर होते तो मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा खुदा न ख्वास्ता हो सकता था। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के ख़तरनाक हालात से बचाए, आमीन। And here are buffaloes, you can see. This is a sort of, you can say, okay, look at this river. And this bridge has been constructed over this, and this is 150 years old bridge here in Sukkur province, Sindh, Pakistan. And this is, you can say, a miracle. Look at the water flowing under this bridge and this huge structure. I don't know that how it might have been constructed 150 years before, when the technology was not that much advanced. Here, when this bridge is over, in the middle here is a place, and that is a piece of land, and again this bridge is started. So this bridge is divided into two parts. After this part, a piece of land is started, and so you can say that this piece of land is in the middle of this river. जगह को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ मेरे साथ दिल दहला देने वाले वाक़या पेश आया, क्योंकि मैं आगे जाके आपसे बयान करता हूँ। इस जगह को तो ज़रा देखिए, ये कितना ख़तरनाक जगह है जहाँ पे मैं अकेला आया था और बहुत ख़तरनाक हालात से मेरा वास्ता पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो ये रोड है आम ट्रैफिक के लिए, दिस इज़ फॉर द जनरल ट्रैफिक, एंड दैट इज़ फॉर ट्रेन. So here are two bridges. That one is for train and this one is for general traffic. And this is also a footpath here. That's a great facility.
On both sides you have footpath, and you can understand the high approach of English mindset at that time, that how much great their thinking was. I appreciate their high flight of thinking. It shows their greatness. Without of any jealous, I will praise English people for constructing this bridge here. Look at the water is flowing, and look at that boat. This is Sukkur, Sindh. I was highly frightened. I don't know what is that. That is some recreational place. Oh yes, also visit there. Okay, I am here on this bridge, and I am going to give you a full view of this bridge. Now I am standing in the middle of this bridge. One. One 150 years old engineering miracle. I'll say this is an engineering miracle. Sukkur Bridge in Pakistan, over this big river. Now this bridge is over, one part of this bridge, and now this is a dry piece of land here, and the other part will be started next. Now the other part of the bridge will be started. This is just 4 minutes walk. The distance is just a 4-minute walk in the middle of these two bridges here in Sukkur, Pakistan. So now the other part will be started here, and I'll also show that. Okay, here in this part, these are, I think, for train offices. This is train here, and that is bridge. Now this is the second part of this bridge, will be started from here, and you can also watch it now. Now I am entering to this area, and this is the gate of this bridge, and this bridge is also as old as that first one, so they are 150 years old, and you can say this is a miracle of engineering at that time.
It has also two parts. That is for traffic, and on both sides of the road you have footpath, so pedestrians can easily pass through this bridge. And on this side, this is for train. So this side for traffic, road traffic, on both sides are footpath, and that is for train. And this is the river, and that is the dry land in the middle of this river. So you can say that here, from here, this river has been divided into two, and here this dry land, piece of this dry land, and that is one part, and this is the other part here. So you can see, and this is the river. Here okay, look at those are pigeons. Look at those pigeons. That is a strange thing for me, that pigeons are sitting on the water. Oh my gosh, for the first time I saw this, because I have never seen before that pigeon can sit on water, and they are sitting on water. Look at those pigeons here in Sukkur, Pakistan. On both sides of the rivers, here are tall buildings, plazas, and I have never thought Sukkur will be such a big city, but now I understood that this must be the second largest city of Sindh after Karachi, because this is very big city. This is very big city, full of plazas in a number of flights, and here many historical places, and the first and the foremost historical place is this bridge over this river, 150 years old this is. So this is the other end, and you can say I completed this. I talk about the length of this bridge, so you can complete it by walk in 7 to 8 minutes, both of the parts of this bridge, this part and that other part. And this is the river. Here it is going to be ended. वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, वो वाक़या तो पूरा मैं नहीं सुना सकता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि ऐसी जगह पे बिल्कुल अकेले मत जाए, और ये बहुत ख़तरनाक होता है कि आप अकेले एक ऐसी जगह पे जाए। तो अल्लाह ताला ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे अकेला बिल्कुल मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।